We will be having a detailed lecture for economic survey as well as for the union budget. But for the timing, what you can do from this economic survey will be approached not only with respect to the fact only, that you will be getting many facts here. You have to basically use this economic survey to get the language of the economic survey. Language means you have to incorporate that language in your answer. तो इंडियन इकोनॉमी का जब आप आंसर लिख रहे हैं, then you are expected to incorporate that statement and the language. And when I said the language as a statement, actually it means this entire economic survey is having 13 chapters. In total 13 chapter हैं. Sector wise a few chapters like for industry, for agriculture, for services, then for monetary management, for public finance, then state of economy, medium term growth prospect, infrastructure, then social developments, then climate change and so on. So if you see all the topic, the economic survey basically contains these chapters. So one chapter is the state of economy, second is all about the monetary management and financial intermediation. So it will be related to all the banking information and the monetary tools. Third is all about price and inflation. Fourth is all about external sector. So external sector means composition and direction of trade, where you are exporting, what you are exporting, from where we are importing, which type of product we are importing. Then the foreign trade policy, recent changes. One part will be the medium term outlook, growth vision and for New India, climate change and energy. Optional के लिए आप you can ignore, but it will be better if you go and refer to all the chapters. Social sector, employment and skill, and then sector wise agriculture, industry and services, and then infrastructure and climate change. ये 13 chapter in total है. Now when you read those chapters, जब content आप begin करेंगे, that means for example suppose you start with the first chapter state of economy. तो state of economy में जब explain करना है तो state of economy introduction part like India's calibrated response to the pandemic on the economic front included 3 salient components. Now many questions related to the COVID is coming. जैसे करंट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी है कि कोविड के बाद का जो इकोनॉमी पॉलिसी चेंजेस है, यू हैव टू एक्सप्लेन बेसिकली द गवर्नमेंट अप्रोच टू डील और टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट. So what was the government approach? So when you are answering those questions, the best answer is available to you. The 3 components, you have to highlight those 3 components. So component wise, like for example it says that the first has been the focus on public spending on infrastructure. So even if you write only that line, that will be enough. The first approach will be focus on public spending on infrastructure. If you have to elaborate, which kept the economy afloat by creating a strong demand for job and the industrial output and triggered. तो अगर आप long sentence ना भी याद रखो, तो even if you write that the first focus was basically on spending on infrastructure. Then the second has been partly a natural response of the business enterprise and public administration amidst adversities. That is digitalization of the service delivery. So use that only that second sentence, second approach, second component, and then explain the third one. So like third one is basically the third has been embodied in the Atmanirbhar Bharat Abhiyan in terms of targeted relief to the different sectors of economy and sections of the population and structural reform that assisted a firm recovery and increased medium term growth potential. अब यहाँ पे जो कंटेंट हाईलाइट किया हुआ है, आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको आप सेपरेट स्पायरल में कॉपी कर लोगे. आप अपने तरफ से पढ़ते समय यही काम करना है. रिमेंबर यू कैन नॉट कॉपी द इंटायर पैराग्राफ. ये अगर कंप्लीट ये फर्स्ट पैराग्राफ भी लिख दोगे तो ये अबाउट मोर देन 150 वर्ड्स वैसे ही हो गया. आपका पूरा आंसर ही 150 वर्ड्स का है अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हो तो जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक में मेंटेन करो. दिस टाइप ऑफ हाईलाइटेड पैराग्राफ और सेंटेंसेस
if you go by or compile from the all chapters, about maximum you can say 40 के आसपास होंगे, 40-45 maximum, 40-45 you can say short paragraph. Now out of it is not that from all paragraph there will be question, और अभी ऐसे भी नहीं सोचना है कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे यूज़ करना है मुझे. It will come naturally over a period of time. Now out of that 40 or 45 paragraph, पेपर के अंदर आई एक्सपेक्ट अराउंड 8 to 10 आप यूज़ कर पाओगे. बट जितने भी 8 to 10 क्वेश्चन में आपने यूज़ किया है, उस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स बढ़ जाएगा. जितने क्वेश्चन में आपने उसको यूज़ कर लेगा, मतलब इफ़ यू आर एबल टू राइट इन दिस फॉर्मेट, देन इट विल बी द वेरी इफेक्टिव आंसर. So what you have to do basically, just write down or underline the key sentences of paragraph, maintain a separate spiral. उस सेपरेट स्पायरल के अंदर ये कंटेंट लिख देना है आपको. इट इज़ नॉट अबाउट द फैक्ट ओनली, इसमें कुछ फैक्ट नहीं है, बट ईच एंड एवरी क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट. एंड इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट इन द इंडियन इकोनॉमी कि आपने डेटा लिख दिया बस. द मोर मार्क्स विल बी अवार्डेड ओनली व्हेन यू एक्सप्लेन इट. दैट मीन्स द रीजनिंग विल बी मोर इंपॉर्टेंट. क्रिटिकल पॉइंट विल बी द रीजनिंग, but obviously you can say that reasoning has to be backed by some data. If you are saying that growth rate has increased, then you have to substantiate it. If you say that the composition and direction of trade has changed, then you have to also substantiate it. For substantiating you need the data, but data cannot replace the explanation. किसी क्वेश्चन के अंदर हमने डेटा नहीं भी लिखा बट एक्सप्लेन कर लिया, इट इज़ गुड. बट ये नहीं कि होगा कि सिर्फ डेटा हमने लिख दिया और एक्सप्लेन नहीं किया, उससे नंबर नहीं आना कभी. तो एक्सप्लेनेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं होगा डेटा. तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में इस फॉर्म के सेंटेंस से मिलेंगे. देन वी एक्सप्लेन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो और गो बाय द अदर चैप्टर्स लाइक मॉनेटरी मैनेजमेंट. सो इफ़ यू गो बाय द मॉनेटरी मैनेजमेंट चैप्टर, द सेकेंड चैप्टर मॉनेटरी मैनेजमेंट. अब करंट ईयर में जिनको अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल RBI DPR का एग्ज़ाम देना है अक्टूबर के मंथ में, expect more question you can answer from this monetary management chapter alone. And in this chapter, like introductory part, the Indian economy's financial and banking sector has shown a strong performance despite continuous geopolitical challenges. The central bank maintain a steady policy rate throughout the year. तो मतलब if you are writing for the current monetary policy approach, so for the current monetary policy approach you can use this type of sentence. Or for the overall monetary approach, like monetary policy plays a crucial role in determining the economic condition of a country through its influence on macroeconomic indicators such as growth, inflation and investment. Any question on the monetary policy, you can begin with that sentence, 20-25 words का sentence. But if you are able to write that sentence as it is, then it will be more effective. The primary objective of monetary policy is to maintain price stability with keeping in mind the objective of growth. So in any book you will find that the objective of monetary policy is growth with stability. Short में लिखें तो growth with stability है. So monetary policy is aimed to promote growth, but growth with stability of price. So we have written the same thing, that the primary objective of monetary policy is to maintain price stability while keeping in mind objective of growth. And various instruments of monetary policy like CRR, SLR, open market operation and imposition of credit ceiling are used by the central bank in the direction of this overall objective. तो यहाँ जो कंटेंट लिख रखा है इसको आपको याद रखना है, दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ. In any question you can use it related to the monetary policy irrespective of the question. तो इस तरीके के जो कंटेंट है उसको बेसिकली आपको प्रिपेयर कर रखना फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स. लाइक when you are reading the industrial chapter you will be getting important paragraph from MSME sector. Then disinvestment policy. In agriculture you will be getting important paragraph related to the agriculture price policy. Then within that agriculture price policy, then for the food management, तो question related to the TPDS is coming regularly. तो food management का जो paragraph होगा that will become critical for you. तो just we will be providing you the content. जो content lecture के अंदर करेंगे will be doing it thoroughly. That means it will be around a 5 to 7 lecture to cover the entire survey. But
On your own what you can do in between is basically just go through the document. और डॉक्यूमेंट में ईच एंड एवरी पेज का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दो एंगल से इसको प्रिपेयर करना है. इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मीन्स यू आर इफ ओनली डीलिंग फॉर द सब्जेक्टिव और ऑप्शनल पेपर पॉइंट और डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, you can ignore some data, but if you are reading it for the objective point of view also, फिर आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा पूरा, तो फिर देन ईच एंड एवरी पेज यू कैन से विल बी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव इनफ टाइम टू रीड दिस और गो थ्रू विद दिस डॉक्यूमेंट. नाउ एज कम्पेयर टू द इकोनॉमिक सर्वे का कंटेंट काफ़ी वाइटल है, मतलब उसके अंदर यू विल बी गेटिंग द डिस्क्रिप्टिव आंसर एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव. बट एज कम्पेयर टू दैट इफ़ यू रीड द बजट डॉक्यूमेंट, तो बजट डॉक्यूमेंट का वॉल्यूम फिर कम होगा. वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रपोज पॉलिसीज होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से नहीं मिलने वाले. बट इफ़ यू गो बाय द बजट, तो ये की फीचर्स बेसिकली यूनियन बजट के 24-25 के, तो की फीचर्स बेसिकली आप रोड मैप फॉर द विकसित भारत, तो व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इट यू हैव टू कवर. देन बजट प्रायोरिटीज़, तो प्रायोरिटीज़ में अगर आप इस तरीके के पॉइंट्स एक जगह लिख के रख लो कि व्हाट आर द प्रायोरिटीज़ ऑफ दैट. आई थिंक विकसित भारत अप्रोच इकोनॉमी सर्विस में करंट ईयर में पूछा गया. अब कोई स्टूडेंट अगर वो आंसर लिख रहा है और यहाँ से अगर इस फॉर्मेट में अगर लिख दे वो, देन इट विल बी ऑलवेज प्रेफर्ड. बट दिस विल ऑल्सो गिव यू सम इंफॉर्मेशंस अबाउट द ऑब्वियसली द प्रायोरिटीज़. देन informations related to various data, these type of table, rupee comes from and rupee goes to, that means if 1 rupee is collected by the government, then it is coming from which sources, और उसका जो ordering है वो भी important है, in which order it will be, first, second, third and so on. And if government is spending that rupee, then where does rupee, that single rupee goes to, what proportion is goes to subsidy and other expenditure. So these type of informations are basically very handy to start any answer of it, answer to the question also. Objective के लिए तो important है ही. Then expenditure of the major items. So budget is more relevant according to me is for the objective part, few questions. But as compared to the budget, economic survey आपके लिए काफ़ी relevant document है. ठीक है, तो प्रेफरेबली सर्वे को आपको थॉरली रेफर करना है कंप्लीट, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. यू कैन इग्नोर सम माइनर चैप्टर्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड देन सोशल डेवलपमेंट, बट मेजरली इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी मैनेजमेंट, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ये चैप्टर एक्सटर्नल सेक्टर वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको रेफर करना है. बिकॉज व्हेन वी स्टडी द इंडियन इकोनॉमी वी विल बी ऑल्सो डिवाइडिंग इंडियन इकोनॉमी इनटू डिफरेंट पार्ट्स. So for each and every part, that means once we cover industry, we will refer to industry in the economic survey. Once we cover agriculture, we will refer to agriculture stated in the economic survey. तो वो content basically upgrade होता जाएगा. ठीक है, तो there will be around 5 to 7 lectures for this economic survey as well as including the economic union budget.